Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. And I'm the your educator. And in the previous video of microeconomics, we have done till determinants of market supply. Okay, like demand, we have the most important chapter is supply, and it is totally from the manufacturer, seller, or point of view. तो जो डिमांड था आपका वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू था. सप्लाई जो है आपका वो पूरा आपका मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, so I've already given you and we have already discussed the meaning of supply. Okay. But now today what we are going to do, the supply function. Supply function is basically what? That is supply function. It is the functional relationship. Relationship. जहाँ पे भी function आएगा, it means the relationship between the quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it. So whenever you get the term function, it means it's showing the relationship between two things. Here the two things are the quantity supplied, okay, that is the supply of a particular commodity and the factors which can influence it. Now what are the factors? It is price of the good, price of the, you can say, the other goods, the state of the technology, goals of the firm. So now we are going to study that how it can, we have already studied that how these things influence a price of not the price, but due to the change in the price of these factors, okay, how they influence the supply. For example, as the state of technology is advanced, then how supply is affected. If the supply of the given commodity is the price of the given commodity is given, okay, if it is increases, then how the supply reacts. So all these are the supply function. Okay, now individual supply function is what? Individual means when we are considering only a individual person or a seller or a manufacturer, okay, a single person. That means individual supply function refers to the functional relationship between supply and factors affecting the supply of a commodity. It's a single thing. Okay, so the supply of the given commodity. So here you can say S and X. Here supply of the given commodity X. Commodity X का supply कितना होगा? That is the functional relationship between the X of price of the X commodity, price of the other goods, then state of technology. Okay. S और T का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है ना, where ST stands for state of technology, G is for the goal of the firm, price of the given commodity of X, and price of the factors of production and taxation policies. All these things we have already covered in the previous class. Okay, just go through it. इंडिविजुअल का बेसिकली मतलब क्या है? एक सिंगल सेलर के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, एंड हाउ ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स अफेक्टेड. देन मार्केट सप्लाई फंक्शन, व्हेन वी take many sellers, okay, or the sellers who are there in the market of a commodity. So when we are going to study that, that is going to be a market supply function. Market supply function refers to the functional relationship between market supply and the factors affecting the market supply of a commodity. Okay, it is also affected by some other factors like, now instead of apart from these things, ये भी चीजें होंगी, उसके साथ साथ क्या चीजें इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम? फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन. जो हमने एक्स्ट्रा बाद में डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना प्रीवियस वीडियो में, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द मार्केट सप्लाई फंक्शन. ओके, सो हियर यू हैव, देखिए यहाँ से है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मींस ऑफ प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो यहाँ तक ये सब सेम है, राइट? चेंजेस कहाँ से आए आपके? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से आ गया, नंबर ऑफ फर्म्स आ गया. ओके, नंबर ऑफ फर्म्स देखो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा आए ना 3-4, ये बस हम जब इसमें ऐड कर लेंगे तो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द मार्केट सप्लाई फंक्शन. नाउ हियर यू हैव द सप्लाई स्केड्यूल. सप्लाई स्केड्यूल कैसे बनता है? ये भी दो तरह की होती है. एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. So supply schedule is a tabular statement showing various quantities of commodity being supplied at various levels of price during a given period of time. Right? Schedule is basically क्या होता है? एक tabular form, एक टेबल आप बनाते हैं जिसमें quantities अलग, प्राइस अलग. ओके, तो उसको हम कहते हैं, जब हम उसको सेपरेट एक टेबल फॉर्म में बना देते हैं, दैट इज नोन एज द स्केड्यूल. ओके, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी told you or make you everything understand in the chapter demand. Okay, तो schedule क्या होता है, graphical representation क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था. Similarly वही जो डिमांड में पढ़ा था उसकी भी वही सब कैटेगरीज आपकी उसी तरह की आती है सप्लाई में भी. ओके, हमने डिमांड में भी पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व. सिमिलरली यहाँ पे सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व, सेम सब चीजें वही आएंगी. ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल क्या मतलब क्या है? डिफरेंट. सिमिलरली हियर
टैबुलर स्टेटमेंट मीन्स टेबल एक स्टेटमेंट होगा जो कि इंडिविजुअल का होगा, एक मार्केट का होगा. नाउ यू विल स्टडी हियर, दिस इज द टेबल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. ओके, now individual supply schedule refers to a tabular statement showing various quantities of commodity that a producer is willing to sell at various levels of price during a given period of time. Okay, and market का क्या होता है? Showing various quantities of commodity that all the producers are willing to sell. यहाँ पे all है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है आपका? सिंगल प्रोड्यूसर. ओके, सिर्फ डिफरेंस इतना है, पूरा आपका डेफिनेशन सेम. इंडिविजुअल सप्लाईज के लिए रिफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, refers to a tabular statement showing various quantities of commodities that all the producers, देखो all the producer है, data producer is willing to sell, is are willing to sell, जाहिर सी बात है प्लूरल हो गया ना, to sell at various levels of price, टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ एक यहाँ पे एक सिंगल प्रोड्यूसर हो जाएगा जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, एंड व्हेन मार्केट में क्या हो जाएगा? ऑल प्रोड्यूसर्स हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन सी हियर दैट इज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सप्लाई, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा, एज द प्राइस इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा. ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा सप्लाई का हमेशा, और डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, ये हमेशा याद रखना, ऑपोजिट दोनों होते हैं. देन प्राइस जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी बढ़ रही, बिकॉज मेन इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रोड्यूसर का राइट टू अर्न द प्रॉफिट. सो वन प्राइस था तो क्या था आपका? जीरो सप्लाई थी. जैसे ही प्राइस इंक्रीज करा 2 पे, देन द प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड इज 5, देन एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं. ओके, now here similarly market supply schedule means all the producers in the market, so we can also make a table, okay, like this, that price इतने आपके हैं. फॉर एग्जाम्पल सप्लायर आपका ए है एंड सप्लायर बी. ओके, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, देन वी गोइंग टू गेट द मार्केट सप्लाई यूनिट्स. यहाँ पे और भी सप्लायर्स आ सकते हैं, बट just for sake of you can say the convenience, we have done this. So 5 plus 10 equals to 15, यानी कि मार्केट सप्लाई कितनी होगी टोटल प्रोडक्ट की? एट द रेट ऑफ 2, एट द प्राइस ऑफ 2, कमोडिटी जो आपकी सेल आउट हो रही है वो 15 हो रही है. एज द प्राइस इंक्रीजेस टू 3, देन ए जो सप्लायर था उसने 10 कमोडिटीज का करा सप्लाई एंड 20, सो इट मेक्स मार्केट में कितना गया? 30. एंड देन फोर्थ, जैसे इसका प्राइस 4 बढ़ गया, 3 से 4 पे आया, तो क्या हुआ? क्वांटिटी ए ने सप्लाई करी 15 एंड देन बी 25, एंड देन मार्केट में कितना हुआ? 15 प्लस 25 इक्वल्स टू 40. सो वी कैन सी द डिफरेंस हियर कि इंडिविजुअल में और इसमें जो है क्या होता है? एक गैप आता है. 1 पे कितना था? 0 था, और यहाँ पे 1 पे क्या है? 0 ही है, बिकॉज 1 पे कोई भी सप्लायर तैयार नहीं है बेचने के लिए सामान. सेकंड, जैसे इसका प्राइस 2 हुआ, 2 रुपीज हुआ, वहां पे कितनी क्वांटिटी हुई? 5 हुई. एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या हुआ? प्राइस 2 पे 2 प्रोड्यूसर्स आपके सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में 15 हुई. सो देयर इज अ डिफरेंस. ओके, and because of this difference the market supply curve is flatter, because with the change in price the proportionate change in market supply is greater than the proportionate change in individual supplies. ये हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, right? Now with this we come to the next part here, सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड. इसका सिर्फ आप मीनिंग समझ लीजिएगा. दैट इज सप्लाई refers to different quantities of a commodity that the producer is ready to sell at different levels of price. सिंपल आपका सप्लाई का मीनिंग है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अ सप्लाई ऑफ 5 यूनिट ऑफ 2, अ सप्लाई ऑफ 10 यूनिट्स एट 3. ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है 10 यूनिट्स क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 3. सिमिलरली हियर क्वांटिटी सप्लाइड इज व्हाट? क्वांटिटी सप्लाइड refers to a specific quantity, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही आ रहा है, सेल हो रहा है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटी सप्लाइड. यू शुड नो द मीनिंग ओनली. ओके, the supply curve I was already told you there is a direct relationship between the price, the quantity supplied, okay, and there is a, just due to direct relationship here, the supply curve is what? That is the upward sloping curve. Okay, now we will just study here. Supply curve refers to a graphical representation of the supply schedule. तो जो सप्लाई स्केड्यूल बनाते हैं उसी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द सप्लाई कर्व. इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज. हर पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं, राइट? प्राइस को कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई हुआ, उन सबको जब हम जोड़ के एक पॉइंट्स का जो एक कर्व बनाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सप्लाई कर्व. That a producer is willing to sell at various levels of price during a given period of time, assuming no change in other factors. Okay, now there is a direct relationship. जब supply curve बताएगा तो you just have to tell the meaning here, and then you will write just one line.
It shows a direct relationship between the price and quantity supplied, keeping other factors constant. Then like supply schedule, supply curve can also drawn both for individual producer and for all producers in the market. So the supply curve is of two kinds, two types or two kinds, individual supply curve, market supply curve, same like demand. ठीक है. ओके, सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या हुई, जो भी हमने पढ़ी थी कि इंडिविजुअल अगर हम बनाएंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस, उसमें अभी जस्ट प्रीवियस पेजेस पे, वही उसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ बना देंगे इस तरह का, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसको हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट द सप्लाई कर्व, that is SS slopes upward due to a positive relationship between price and quantity supplied. As the price increases, supply also increases, that is quantity supplied also increases. So this is known as the direct relationship, or you can say the positive relationship. Okay, then market supply curve. मार्केट सप्लाई कर्व के, फॉर एग्जांपल ये सप्लायर ए का है, ये सप्लायर बी का है, दोनों को हमने कंबाइन किया तो सप्लायर एम, दैट इज द फॉर द मार्केट निकल आया. ठीक है, तो जो अभी हमने टेबल में बनाया था सेम एज ही आपको फिगर आपको आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, फ्री हैंड. ओके, then market supply curve refers to a graphical representation of market supply schedule. It is obtained by horizontal summation of individual supply curves. Okay, इन दोनों को कंबाइन करके जब हम इनका एग्रीगेट जो टोटल होता है, जब उसको हम फिगर करेंगे बनाएंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ आपका ऐसा आएगा. राइट, so market supply curve, that is the for the market, is also positively sloped due to the positive relationship between price and quantity supplied. Okay, then market supply curve is flatter. जो मैंने आपको डिफरेंस अभी पहले से पहले बताया था टेबल के थ्रू कि डिफरेंस बहुत आता है, वास्ट डिफरेंस आता है जब एक सिंगल प्रोड्यूसर हो उसका और जब दो तीन प्रोड्यूसर्स हो जाए मार्केट में, तो चेंज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. So the market supply curve is flatter because with the change in price, the proportionate change in market supply is greater than the proportionate change in individual supplies. This is very important. इसको जरूर आप करिएगा. Now इसमें खाली आपको मीनिंग पता होना चाहिए. स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व के, तो सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस. जो ये चेंज होता है दैट इज द प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज द क्वांटिटी. ओके, सो द सप्लाई ऑफ द कर्व इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस. जो चेंज इन प्राइस आपका होता है, चेंज मीन डेल्टा. ओके, ट्राइंगल को हम कहते हैं चेंज भी कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. यू शुड नो द formula. Slope of the supply curve is equals to change in price upon change in quantity. Okay, now direct relationship इसका होता है, we already know that is price and supply, they have a direct relationship, it slopes upward, so the slope is positive. Okay, then slope of supply curve measures the flatness or steepness of the supply curve, so it is based on the absolute change in price and quantity. Now how you can just calculate, we can just get the example like this. आप इस तरह का slope बना देना बस खाली. Okay, diagram same वही आपका बनेगा. Now here the change is what, the prices आपका 4 to 8 change हुआ है और यहाँ पे 2 units to 4 units. तो change in price कितना हुआ, 8 से 4 पे चला गया था and quantity change हुआ 4 minus 2. So slope of supply curve is 2. I hope you understand this concept, and in the next video we are going to start the law of supply. Hope you understand it very well. Keep watching, keep learning, and thank you.